हाय रुचि। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ढंग से करना है। करत खराब। So see, evaluation in is a necessary see in this topic ना। कितना क्वेश्चन आता है इस सेक्शन से, पहले उस चीज़ को समझो। गुड इवनिंग सर, सर और मैम, if you mention this it will be better. So now listen, in this session we are expecting at least one question. CBSE में CTET का 23, 24, 25 sessions में we have seen some questions. One in 2013 it came. Okay, sound is not clear. Is it so? Ruchi, is the sound clear? No, sound system is working well. Yes, it's clear. So see, CBSE में 2013, 2014, in 2014 they have given from this topic nearly. Oh, it's perfect from my side. Okay, fine. Now let's see. So in this section now, CBSE, see this is one of the most important part CBSE में बोल रही हूँ. CTET में इस section से seated in this section, they have asked nearly 3 questions. Can you see evaluation is a necessary evil. It ensures the perfection level of learner. Therefore, it is highly important segment. On analyzing the previous paper, we know that few questions have been raised from this chapter. There was no question in 2011, 2015 and 2016, but there was one question in 2013, two questions in 2012 and three questions in 2014. So definitely these type questions was coming. I'm in class. Can you message me please? Okay. So definitely teachers teach and help learner to learn. See, one important thing is evaluation of achievements and formations of questions. So first thing, what we are understanding here is when somebody will be asking you why we are setting a question, then what answer you are going to say? You will have a simple answer that I'm setting a question for only one purpose, and that is to evaluate my student that they have learned or not, they have achieved that process or not. That's the most important thing. For that only we are setting questions. Now, otherwise, what is the purpose of setting questions and what is the purpose? Because if I will not be teaching a topic, then how can I expect my students to answer the question? I hope you might have understood. Ruchi, check you are live or not. So definitely, this is one section. So when anybody will be asking you this question, then what answer you are exactly going to give? You will be saying to this answer only, na? Just 1 minute. So this is exactly yes. So what was the basic purpose of teaching? If somebody will be asking you, the basic purpose of teaching will be what? To give the prime information, the primal information. Understood. To keep the primary information. What is the primary work of a teacher? Harul, you are irritating me.
Fine. Sorry for the miss. She's my faculty is messaging. So now, teacher teach and help learner to learn. This learning must be assessed for the learner to know what he has achieved and for the teachers to evaluate his teaching. At the end of the lesson, the teacher needs feedback to understand that the learner achievement level is what. Understood or not? So this line is the most important line. We have to, the teacher has to understand the learner's achievement due to the teacher's effort and thus also assess his own achievement as a teacher. So this feedback usually work as a tool for achievement test. So this is the most important thing. See, please remember one thing. Like if I am talking to you, I discuss something with you, like I said some story to you. This is simple process I am explaining. So if I prime work is to impart knowledge to learner, yes, but one most important faction is also there, na, Ruchi. That like I am saying something to you, Ruchi. After that, at the end of the full story, I'll definitely be wanting to take your feedbacks. Like in this story, what and all things happened, this happened, that happened, and that particular moment, these were the situations I was struck there. So definitely, you will be saying some conclusions. Hey, you must not do this, you must not do that. That means what? You were consciously listening my statement. Understood or not? And then you have stored the prime information in your brain and then you interpreted your own understanding of that story and then you have given some conclusions. This is called as learning. Understood or not? Where we take informations, interpret in our own way, and then we explain the things in our own contents. Understood or not? That is exactly the process of learning is about. So when we do like that, it exactly the channel will be generated. So here, if I am a teacher and teaching. So my prime duty is to let the student understand the story. If I am a literature teacher, after that I want my student to give me the feedback. What in the sense of feedback here? Feedback in the sense of question answers, in the sense of fill in the blanks, true, false, or in the sense of some extra questions. So this will become my feedback to the student. Okay, fine. This place where there. So that was if the student answer all the content very whatever effectively and correctly. That means my prime duty of imparting knowledge as a story got success. So that means the student. Our main criteria is Ruchi. What you wrote now. Prime work is to impart knowledge. Yes. So that information transfer. So that information transfer is done very accurately. And since the information transfer has been done accurately, our work is done. Class. Live class. So definitely this work is exactly done. So 100% you need to understand this one. So once our work is exactly done, we understood like okay fine, this is the work and these are the loopholes and these are the contents. I hope you might have understood Ruchi. So achievement of a learner. So academic achievement of a learner is the knowledge, understanding, skill, learning, attitude, etc., which can be assessed by means of test during or after the learning teaching activity. So learning teaching activity done. So once the learning teaching activity is done, huh? Learning teaching activity is done. At the time when this learning teaching activity is done, that time the result will be exactly explaining the effectiveness of the learning teaching activity. Understood or not? So learner is the knowledge, understanding, skill, learning, attitudes, etc., which can be assessed by means of test during or after the learning teaching activity. So academic achievement of learner also indicate the learner quality, the quality of curriculum, the quality of learner teaching activity, and the ability of both the teacher and the learner. This is the most important part, the ability of both the teacher and the learner. अगर मैंने तुमको उल्टा पढ़ाया, गलत पढ़ाया, नॉनसेंस पढ़ाया और उसके बाद तुमसे मैं एग्जाम्स का एक एक्सपेक्टेशन रखती हूँ कि हाँ तुम एग्जाम दो, तो तुम तो एग्जाम में वही गलत ही लिखोगे ना, जो गलत पढ़ाया वही गलत तुम लिखोगे, तो वहां पे क्या हो गया, हमारा इफेक्टिवनेस तो गया ही गया, करेक्ट ना, इफेक्टिवनेस तो गया ही गया, स्टूडेंट
भी गया साथ में, और स्टूडेंट के साथ साथ टीचर का भी नैया डूब गया। सो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होता है कि जितना भी करिकुलम दिया गया है तुमको, वो करिकुलम को तुम किस तरह से प्रेजेंट करते हो, मतलब वॉट एवर करिकुलम इज गिवन टू यू, how you are presenting the curriculum, you are representing a school. Actually what a teacher responsibility is, ki once a teacher is exactly joining a school, they are not an individual now, they are exactly a part of the system, a part of the management. Now they are representing a school. Now in that, through that school you are teaching, you are not an individual. Till I am teaching in Amaya coaching means I am the person who is teaching, means I am responsible for it, because I am an individual entity. The downfall of any student is on my shoulders, so that's my primal activity, my prime responsibility. But since if I join some XYZ school and I am teaching in that XYZ school, and in that XYZ school if the students are failing, miss, it comes not only on my shoulders, it comes in the management also, understand? So here not one part, the entire system will come into that if one student will fail. So that means the authority will come under question, like why, when, how, in which way this downfall came. So all the answerable authority will come to the entire segment. This depends upon three factors which are, so definitely रुचि क्या समझ में आया तुमको ये बात कि यहाँ क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट होता है, प्राइमरी वर्क क्या है इसका, व्हाट इज द प्राइमरी वर्क ऑफ इट? Did you understood what is the primary work of it? What is the primary section? What is the primary work related to it? The primary work related to it is a teaching learning process. Teaching learning process में उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे निकालना है, और कैसे उसको, मतलब एक अकेले हम एंटिटी नहीं रहते वहाँ पे, पूरा सिस्टम हमारे साथ आ जाता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाता है। ठीक है, अभी this depends on three factors, which are, what are the three factors? Biosocial. These are inborn characteristics due to gender and age, as well as features such as education, hometown, upbringing, personal differences. ये सारा factors यहाँ पे include हो जाता है। ठीक है, एक बार फिर से देखो, बायोसोशल, तो अकाडमिक अचीवमेंट्स जो होते हैं किसी भी लर्नर की, वो हम कैसे निकालते हैं? हाउ वी आर फाइंडिंग द एकेडमिक अचीवमेंट्स? So a learner also indicate the learner quality, the quality of curriculum, first part. Second part is quality of learning, teaching activity and ability. So everything we are checking. So once we are checking everything, we are checking the part also. So what and all things are there, what and all work we are doing. I hope you might have understood this one. Come on, say Ruchi. Did you understood this part? Impart knowledge, make sure how much child has learned. Yes, absolutely. So everything will come under accountability here. I hope you have understood this one. Biosocial. Biosocial means what? These are inborn characteristics. Gender. Gender means कि okay, if girl is there means girl learning capacity is different. If boy is there, boy's learning capacity is different. So like this, girl is there, girl learning capacity is different. Boy is there, boy's learning capacity is different. Next, age. Age group is also one of the most primal thing, that in age group what work you are doing. Next is education, hometown, upbringing, personal differences. Personal differences is also very, very important. So if somebody will be asking you about personal differences, how you are exactly going to generate the personal differences? Like all the individuals are not the same. All the individuals are not the same here. Individuals will be different. I hope you might have understood this one. Ruchi, did you understood? Yes. So now effective. These include achievement, motivation, study habit. अच्छा यहाँ पे होम टाउन क्यों दिया है रुचि? होम टाउन और एजुकेशन, अपब्रिंगिंग, पर्सनल डिफरेंसेस, ये सब क्यों दिया है? Why they have included these sections?
Can you tell me why they have included these sections? Hometown, they are considering, they are telling that upbringings, personal differences. What is the reason of putting this? And the second part is effectiveness. This includes achievement, motivation, study habits, anxiety, adjustment, responsibility, and interaction between teacher and student. Why they have given two things in two different ways? चलो बताओ इसको. इन दोनों पार्ट को कैसे दिया है और क्यों दिया है, ये तुमको आंसर देना पड़ेगा. यस. तो जिस सराउंडिंग में हम रहते हैं उस सराउंडिंग में हम कैसा इंटरेक्ट करते हैं, उससे भी हमारा जो एजुकेशन का जो लेवल है ना वो पता चल जाता है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. मतलब एजुकेशन का लेवल पता करने के लिए हमको उसका सराउंडिंग, हमको उसका अपब्रिंगिंग, जितना भी सब कुछ है वो सब चेक करना पड़ता है. तो वो अगर चेक हो गया तो वो सिस्टम को अप्रोच करता है, अदरवाइज सिस्टम इट इज़ नॉट अप्रोचिंग. I hope you might have understood it. If he brought up a city, he will have brought thinking. हाँ, thinking broad ये कह सकते हैं, मगर सी यहाँ पे एक बहुत important चीज़ होता है कि जब हम ऐसे सिस्टम में आते हैं रुचि, जब ऐसे करिकुलर सेक्शंस में हम आते हैं, तो आने के बाद हम चीज़ों को अपने तरीके से देखते हैं. अपनी तरीके से जब हम देखते हैं तो अपनी तरीके से उसको इंटरप्रीट करते हैं. मतलब जैसा सराउंडिंग्स होगा वैसा इंटरेक्शंस भी होगा हमारा. वो बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है. अब यहाँ पे देखो इफेक्टिवनेस में कहाँ कहाँ से उठा के चीज़ डाला है. अचीवमेंट्स, दिस इंक्लूड अचीवमेंट्स, मोटिवेशन. यहाँ मोटिवेशन देखो, इफेक्टिवनेस में मोटिवेशन आ गया. स्टडी हैबिट्स, अब जो सराउंडिंग्स होता है ना वो भी स्टडी हैबिट्स पे इफेक्ट करता है. अब मान लो कि तुम्हारे सराउंडिंग में कोई पढ़ता ही नहीं है तो स्टडी हैबिट वैसे ही हो जाएगा तुम्हारा. अगर मान लो तुम्हारे सराउंडिंग में 10 बच्चे हैं और 10 घंटा वो लोग हर दिन पढ़ रहे हैं, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा कि तुमको लगेगा कि यार उसके साथ बैठ के पढ़ना है, क्योंकि वो सारा सारा टाइम अपना पढ़ाई में दे रहा है. ठीक है. अब एंजाइटी, अब लेवल ऑफ स्ट्रेस मीन्स व्हाट, कि मतलब पूरा लोग जो तुम्हारे साथ है वो 24 घंटा पढ़ाई पे डाल रहे हैं, तो तुमको एंजाइटी होगा. तुमको लगेगा कि यार इस सिस्टम के साथ अपने आप को कैसे कोप अप करना है. वहाँ कोप अप और एडजस्टमेंट आ जाता है. ठीक है. फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टडी. फिर आता है तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई मेरे यहाँ पे लेवल पे आकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसा देना है, फिर टीचर्स के साथ एडजस्टमेंट कैसा करना है. बहुत सारा चीज़ यहाँ पे मतलब बैक टू बैक आ जाता है. और वो सारा चीज़ जब एक साथ आता है तो हमको समझ नहीं आता है कि हम कैसे इंटरेक्ट करें. आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस. समझ में आया रुचि? Yes, super. So now we will go with the next one. Evaluate achievement by aligning to learner outcomes. अब यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसको देखो ध्यान से. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट असेसमेंट अलाइन विद लर्निंग आउटकम्स. असेसमेंट जो है वो लर्निंग आउटकम्स के साथ अलाइन होना चाहिए. With learning outcomes. In an outcome-based learning environment, a variety of learners are helped to achieve their learning outcomes. As learning outcomes are performance based. Learner must not only just know but also be able to show what they know. Understood not? यहाँ जानना सिर्फ जरूरी नहीं है रुचि, इसको बहुत अच्छे से समझो. यहाँ पे सिर्फ जानना जरूरी नहीं है, जानने के बाद उसको यूटिलाइज करना भी बहुत जरूरी है. मतलब आप क्या जानते हो वो जरूरी नहीं है, आप जो चीज जानते हो उसको आप कैसे यूज करते हो वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है. It is important that assessment align with learning outcomes. Assessment should align with learning outcomes. In an outcome-based learning environment, a variety of learners are helped to achieve the learning outcomes. Okay, so achieve the learning outcomes. Hello, Ma Nishita.
9 o'clock class is there for you. 9 o'clock class is there for you. When you are coming. So this, I hope you might have understood this one. So this is important, that assessment aligned with learning outcomes. In an outcome-based learning environment, a variety of learners are helped to achieve the learning outcomes. Okay, as learning outcomes are performance-based. लर्निंग आउटकम्स क्या होता है? परफॉर्मेंस बेस्ड. तुम कैसा परफॉर्म करते हो उसी तरह का आउटकम आएगा. लर्नर मस्ट नॉट ओनली जस्ट नो बट ऑल्सो बी एबल टू शो व्हाट दे नो. यहाँ पे परफॉर्मेंस बेस्ड है तो तुमको सिर्फ जानना जरूरी नहीं है, जानने के बाद तुमको अपना परफॉर्मेंस शो भी करना पड़ेगा. ठीक है. एंड दस वेल प्लान्ड असेसमेंट अलाउ लर्नर टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट दे हैव अचीव्ड the necessary learning outcomes or give feedback that identifies the progress they are making towards their achievement. There may be several ways to assess student learning, but they should all be linked directly to the learning outcomes. So this should be linked directly to the learning outcomes. Okay. Now diagnostic tests. देखो यहाँ पे diagnostic test बार बार आता है. यहाँ पे मैंने पहले भी डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में तुमने मुझसे पूछा था, मैंने उस समय भी बोला था. इसको देखो बहुत अच्छे से. टू इंश्योर दैट अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज टू एडिक्वेट क्वालिटी, इट शुड हैव बोथ वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी. दीज टू टर्म्स आर एक्सप्लेन बिलो. वैलिडिटी का मतलब क्या होता है और लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है. वैलिडिटी और लाइबिलिटी इन दोनों को पहले हम समझेंगे, बट उससे पहले डिजाइनिंग असेसमेंट में डायग्नोस्टिक टेस्ट. डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब क्या होता है? उस दिन में मैंने तुमसे एक बात बोला था रुचि. आई टोल्ड यू वन थिंग, सिंपल पार्ट आई टोल्ड यू दैट व्हेन आई एम गोइंग टू डायग्नोस दैट आई एम हैविंग दिस प्रॉब्लम. डायग्नोसिस इज व्हाट, कि मैं सारे फैक्टर्स को, सेवरल फैक्टर्स को आई विल टेक इट एंड आफ्टर टेकिंग ऑल द सेवरल फैक्टर्स I will keep it like okay 1, 2, 3, 4. This becomes my diagnosis that I am not suitable for writing CTET examination. So that's my diagnosis. Diagnosis means I have to see my situations. According to the situation, I have to see means how I am exactly going to write the examination. What and all things I am good at and what and all things I am not good at. So when I am talking about diagnosis of this, so I will keep on checking that okay this are the parameters where I am fit in and these are the parameters I am not fit in. So I am not deserving to write the examination. Like this is the diagnosis. Diagnosis मैंने किया. और diagnosis दो तरीके के होंगे. एक diagnosis में मैं give up कर रही हूँ, दूसरे diagnosis में अपने आप को judge कर रही हूँ. ठीक है. When I am judging that okay fine after this diagnosis, okay fine these are the outcomes and these are the pitfalls where I can fall. So when I am checking my pitfalls that these are the areas where I am falling, then I have to make another strategy. So diagnosis will give me some validation. Okay fine these are the areas you are actually needing some reassurance or you need some backup plans. Understood not? So here diagnostic tests will be giving so much of information to the teachers, to the management. Understood not? And there they will be coming out with some strategies. Okay. So in between the chapter, if I am doing some diagnosis, okay, find this student now he is very weak in integration. Means this is my diagnosis. Now in that diagnosis, I came into a conclusion that okay, find the student is not understanding the content. There only I will stop the topic and again I will give a reassurance. Okay, fine, I have to again restart the system. And again restart the system, again teach the student. So here diagnostic tests are always overwhelmed with proper information. So ये तुमको बहुत अच्छे से समझना होगा. So designing assessment में diagnostic test plays a very vital role. So to ensure that diagnostic test is of adequate quality, it must have both validity and reliability. These two terms are explained below. What is the meaning of validity? This means that the test must measure what it is supposed to measure. Correct ना? Validity, यहाँ पे यही validity के बारे में मैं बात कर रही थी कि हमको चेक करना है भाई कि यहाँ पे मेरा पिटहोल है, यहाँ पे मेरा डाउनफॉल हो रहा है, तो उसी के अनुसार मुझे टेस्ट लेना है. ठीक है. अगर कोई स्टूडेंट इंटीग्रेशन में वीक है
तो इंटीग्रेशन टॉपिक को फिर से पढ़ाना है और इंटीग्रेशन टॉपिक को ही टेस्ट लेना है और फिर से रीचेक करना है, उसका डायग्नोसिस करना है कि पढ़ाने के बाद आउटकम क्या हो रहा है। रुचि बढ़िया से समझ में आया? इसको क्या कहते हैं? वैलिडिटी इसको कहते हैं। ठीक है, मतलब कि टेस्ट मस्ट मेजर व्हाट इट इज सपोज टू मेजर। तो जो टेस्ट तुम ले रहे हो, इंटीग्रेशन का टेस्ट मैं क्यों ले रही हूँ? क्योंकि मुझे पता चला सी, देखो वैलिडिटी का क्या हो गया यहाँ पे, अच्छे से समझो तो कि मान लो कि मेरा एक स्टूडेंट है, मतलब 3-4 स्टूडेंट है, मैंने डायग्नोसिस में डायग्नोस्टिक टेस्ट स्कूल की तरफ से आया कि एक छोटा टेस्ट कंडक्ट करो इन बिटवीन वीकली, वन टेस्ट कंडक्ट, ओके, तो दैट कम्स अंडर, सो वो असेसमेंट आ गया। बट मेरा तो वो असेसमेंट डायग्नोसिस हो गया ना, क्योंकि मेरे लिए वो टेस्ट सिर्फ टेस्ट नहीं है, मेरे लिए ये टेस्ट जो मैं कंडक्ट करा रही हूँ ये मेरा एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, क्योंकि इसके थ्रू आई विल बी एबल टू नो हाउ मेनी ऑफ माय स्टूडेंट इन द क्लासरूम इज नोइंग इंटीग्रेशन टॉपिक। फॉर स्कूल इट इज एन असेसमेंट, for me it is a diagnostic test, understood or not? So this diagnostic test will give me assurance that most of my students are understanding or not. Are you understanding or not, Ruchi? Now you say. So this diagnostic test will give me a feedback. Are you getting my point? It will give me a feedback that how many of my student is capable of passing in integration. I hope you might have understood, Ruchi. I hope everybody understood this. So this diagnostic test will be, yeah, okay. Just 1 minute. I need to schedule the class. 5 more minutes. I will convey this after the class start. Understood now? Okay, so it means that the test must measure what it is supposed to measure. To have confidence that a test is valid, thus the inference we make based on the test scores after that are valid. Three kind of validity evidence should be considered. पहले तो ले लो टेस्ट, उसके बाद स्कोर वैलिड होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, इन्फरेंस एक टॉपिक का होना चाहिए। So three kind of, yeah, inference means related to the topic, related to the topic mentioned. Related to the topic mentioned, okay, so it should be with the inference of the part, means कि जहाँ से हमको जो चीज़ लेना है वो रेफरेंस में होना चाहिए उस चीज़ का। उसके बाद कंटेंट, पहला तो कंटेंट मैचेस द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। तो वो कंटेंट मीन्स स्कूल की तरफ से आया कि भाई इंटीग्रेशन का टेस्ट लेना है,
तो वो कंटेंट जो तुमने पढ़ाया है उसका टॉपिक है इंटीग्रेशन, तो वो मैच कर रहा है स्कूल के टाइमिंग के क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। अब स्कूल ने बोला यू टेक इंटीग्रेशन टेस्ट एंड यू आर टेकिंग डिफरेंशिएशन टेस्ट, सो कंटेंट अकॉर्डिंग टू द असेसमेंट डायग्नोस्टिक, तुमको बोला गया है डायग्नोसिस करने के लिए एक टॉपिक का, तुम दूसरे टॉपिक का डायग्नोसिस कर रहे हो, वहाँ मैच नहीं करेगा। इट इज द एक्सटेंट टू व्हाट द कंटेंट ऑफ द टेस्ट मैचेस द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्रिटेरिया, तुमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा किस क्रिटेरिया से वो बच्चा आ रहा है। It is the extent to what score of the test are in agreement with predicts and external criterions. Understood not? तो जो भी टेस्ट तुम ले रहे हो, मे बी वो टेस्ट तुम्हारे लिए एक डायग्नोस्टिक का काम कर रहा है, बट वहाँ पे वो सारे नॉर्म्स एंड सिचुएशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब वो नॉर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फैक्शन यहाँ पे कैसे आ रहा है, नॉर्म्स एंड कंडीशन का सेटिस्फैक्शन यहाँ पे कैसे देंगे हम, extent to which score of the test are in agreement with or predict an external criteria. Predict an external criteria means कि how we are predicting the external criteria. External criteria means agreement with the external criteria, कैसे predict करेंगे कि क्रिटेरिया था तुम्हारा इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन में वो मैच कर रहा है कंटेंट के साथ कि नहीं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड। इन्फ्रेंस वहाँ पे बहुत अच्छे से देना होता है, अगर इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द इन्फ्रेंस प्रॉपरली तो सारा जो भी तुमने किया ना वो सारा खत्म हो जाएगा, मीन्स वॉट एवर यू हैव डन इट विल बी नॉट गिविंग एनी स्पेसिफिक वैल्यू टू योर वर्क, अंडरस्टूड और नॉट। सो वॉट एवर टेस्ट you are conducting, whatever work you are doing, it must have a proper inference. I hope you might have understood. Understood, Ruchi? I'm having another class, Ruchi. I'm keeping it till here, huh?